So hello everyone and welcome to Career Launcher. So I hope you are aware that every Sunday at 3 p.m. We come up with the weekly revision of the Hindu analysis or the Hindu newspaper of the last 1 week, where I discuss the important articles along with the questions. I do give you questions as well. So if I'm audible and visible, please write in the comments, yes sir, you're audible, so that we can start our session. Please write in the comments. Okay. Let's start with 30th September Monday. तो उसमें फर्स्ट पेज आर्टिकल था इजराइल पाउंड्स लेबनान, 2 more Hezbollah leader among killed and all. So this was very much in the news. तो आप बताइए कि who was actually who was the head of Hezbollah who was killed in Israel attack last week. So what is his name? Please tell me. I'm waiting for the response. Yes. Okay, so here is India. This is actually West Asia. ये भी पूछा जाता है कि the current conflict which is happening is actually which region. So Israel lies in the West Asia region. तो ये सब पूछते हैं region का नाम. ठीक है. So here you can see. So basically this is the Lebanon. This is this portion is actually the Israel. And here is Lebanon. So yes, there's an organization, Hezbollah leader. His name was actually, what was his name? Full name बताइए. Yes, George, Advait and Preetham, you both are right. Yes, Hassan Nasrallah. Yes, Kushagra, Safi, Nomani, you both are right. Everyone, very good. So actually, 2 days after taking out Hezbollah's chief Hassan Nasrallah's, Israel continued to airstrike Lebanon and all. So this was in the news in Monday. Okay, so this is Lebanon and the capital is Beirut, and here actually is Israel. And this port is also very much in the news, Haifa port. It's a very prominent port of Israel, and this has been in the news today. Also, I saw that there have been attacks from here and on the Haifa port and all. So before that, actually, there was an attack from Israel's side, and actually Hezbollah leaders were killed and all. So that is what you should be knowing about. Yes. So the name of the person is Hassan Nasrallah. Yes. Kushagra, Safi, Preetham, George, Advait, you all were right. Okay. So just remember it because these facts can be asked in the exam. Now, one more thing I'm asking is who is, because this was in the news last week, who is the president of Iran, the new president? And who is the supreme leader of Iran? These are in the news. Please tell me. President of Iran, who was appointed as a president few months back, I would say, and supreme leader of Iran. Yes, Masood Pezeshkian. Very good. George Advait, very good. You are right. You have answered me correctly. The name of the new president of Iran. And इनसे पहले कौन थे? Masood Pezeshkian से पहले who was the leader? Masood Pezeshkian है ना? Ayatollah Ali Khamenei. Ayatollah Ali Khamenei. This you should be knowing. ठीक है. Yes, Safi Nomani, you're right. George Advait, you're right. इनसे पहले जो थे मसूद पेजेश्कियान से पहले, before him, the president was Ibrahim Raisi. Okay. And he died in a helicopter crash. I hope you are aware. Few months back. है ना? Yes, Safi, George, Preetham, you all are right. You should be knowing it. Now, first page में एक और आर्टिकल था मंडे को. 92% of workers cleaning urban sewers, Skeptic tanks belong to scheduled caste, scheduled tribe and OBC, says survey. तो इसमें ही कहा गया कि जो नाली वगैरह साफ करते हैं उसमें से ज्यादातर SC, ST और OBC ही के पाए गए लोग. So they are actually belonging to the lower caste. That was actually a survey said. इसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो scheduled caste से थे, then 68.9, then 8.3% scheduled tribe से 14.7 actually from OBC, and then general category से 8%. So mostly actually they are from scheduled caste, what we call it as in local languages Dalits. So that is what you should be knowing. एक चीज और आपको पता होना चाहिए. The Supreme Court has said, the Supreme Court has banned human manual scavenging. उसने मना किया है Supreme Court ने. I hope you are aware. The Supreme Court has
put a ban on manual scavenging to be done by human. Why? Because it violates which article of the Constitution? बताइए, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन. जो ये स्केप्टिक टैंक क्लीनिंग जिसको हम लोग इंग्लिश में मैनुअल स्कैवेंजिंग कहते हैं, यानी कि इंसान जो है नाली के अंदर जाते हैं और साफ करते हैं एंड ऑल, दिस इज प्रोहिबिटेड बाय सुप्रीम कोर्ट. तो वो कौन से सुप्रीम कोर्ट ने कौन से आर्टिकल यूज करके प्रोहिबिट किया है? व्हाई इट हैज प्रोहिबिटेड? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? व्हिच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल? 14, 15? एनीवन एल्स? कोई और आंसर? The right answer is, देखो मैं आपको हिंट देता हूं. The Supreme Court said it is against right to dignified life. Right to dignified life. Now please tell me up. And in this menial job, this job is actually against human dignity and violative of this article, and that is why Supreme Court has banned it. अब बताइए. 21. Very good. Yes. मैंने आपको बताया भी आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. ओके, एंड इन दैट, यस प्रीतम, यू आर आल्सो राइट. सो इट टॉक्स अबाउट राइट टू डिग्निफाइड लाइफ एज वेल. ओके, दैट इज व्हाट यू शुड बी knowing. Now here actually there was an editorial talking about the new prime minister of Sri Lanka. What is his name? Can anyone tell me? AKD, the new prime minister of Sri Lanka is Anura Kumara Dasanayak from JVP, People's Liberation Front, and led NPP. ठीक है, ये पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, और नेशनल पीपल्स पावर. ठीक है, एंड दे आर एक्चुअली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. नाउ, ये तो मैंने आपको बता दिया था कि सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड गवर्नमेंट व्हाट इट हैज डन टू एंड मैनुअल स्कैवेंजिंग. तो ये कई बार सुप्रीम कोर्ट पूछते भी रहते हैं कि आपने उसको एंड किया. अब बोले सर इसका सॉल्यूशन भी तो आप दीजिएगा. तो सॉल्यूशन इज मशीन. अब एक से एक रोबोट, मशीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वी आर सो मच ahead. We are actually sending humans to space now, so we can clean these tanks or these sewage with the help of machines. Why we are sending humans? शायद आपको पता होगा, उस जैसे ये मैन होल होता है उसके अंदर ह्यूमन जाते हैं साफ करने के लिए, एंड मेनी टाइम्स दे डू डाई ऑल्सो बिकॉज ऑफ सफोकेशन और बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम आउट एंड ऑल. तो इसीलिए ऑफ कोर्स वी नीड टू रिप्लेस दीज थिंग्स विद रोबोट, मशीनरी एंड ऑल. ठीक है, ये पता होना चाहिए. खैर, एक और चीज है, दिस हैज बीन वेरी मच इन द न्यूज, इसीलिए मैंने सोचा इसको डिस्कस करा ले. मैड डॉक्ट्रिन, ये समझते हो? कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज मैड डॉक्ट्रिन? इसको कहते हैं म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. अब ये क्या होता है? म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है इफ टू न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज गोज फॉर द वॉर and if they use, one will use nuclear weapon, then the other will use, and both will kill each other, both will eliminate each other. मतलब ये हुआ कि अगर दो मुल्क है और दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है, मान लीजिए ए है, इसके पास न्यूक्लियर वेपन है, बी है, उसके पास भी न्यूक्लियर वेपन है. ओके, नाउ अब दोनों में वॉर हो गया. इतना हो गया वॉर कि दोनों में से मान लीजिए किसी एक ने न्यूक्लियर वेपन गिरा दिया. तो जो ये ऐसा काम करने जा रहा है, मान लीजिए ए ने बी पे गिराने जा रहा है, तो उसको पता तो है ना कि बी के पास न्यूक्लियर वेपन है, तो ए भी यूज कर लेगा. तो इसीलिए कहा जा रहा है कि ए अगर न्यूक्लियर वेपन गिरा रहा है तो ये सुसाइडल है. बिकॉज इफ ए इज ड्रॉपिंग न्यूक्लियर बॉम्ब एट अदर बी व्हिच इज अ न्यूक्लियर वेपन कंट्री, देन बी विल आल्सो बॉम्ब इट बैक. दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज मैड म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन. इज इट क्लियर? ये एडिटोरियल आया था, होपफुली आप समझ गए होंगे. बिकॉज जब भी वॉर्स वगैरह होते हैं, जैसे ये सब वॉर हो रहा है, तो कई बार जो है थ्रेटन भी किया जाता है कि आई विल यूज न्यूक्लियर वेपन और वी आर चेंजिंग आवर न्यूक्लियर वेपन पॉलिसी एंड ऑल. ओके, इज इट क्लियर? इंडिया का जो न्यूक्लियर वेपन डॉक्ट्रिन उसको कहते हैं नो फर्स्ट यूज. नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. नो फर्स्ट यूज पॉलिसी मीन्स वी एज अ कंट्री विल नॉट बी यूजिंग द फर्स्ट. If we become a victim, if someone attacks, then that's a different matter. But we are not the one to use for the first time. तो उसको no first use policy कहते हैं. This is India's policy. Okay, that is what you should be knowing about it.
Now, the next is air strikes by Israel against 11 Palestinians in Gaza Strip. अच्छा ये बताओ तो राफा बॉर्डर कहाँ पे मिलेगा? Where do you find? Between which two nations? Can anyone tell me? Where do you find Rafa border? Anyone? So it is between Gaza and Egypt. मैंने कई बार बताया. Yes, Preetham has answered me correctly. Very good. हाँ, ठीक है. तो मैंने let me show if there is a map. हाँ, यहाँ पर. This is Gaza. And ये जो है ना इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है, मैंने बताया कई बार, इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है. So this region is actually called as Rafa border. Okay. Yes. Now let's move on. 170 killed as floods and landslides batter Nepal. देखो एक्चुअली क्या है, देखो ये वाला जो रीजन है ना, ये हिमालयाज है. आई होप यू आर अवेयर. और हिमालयाज में बिकॉज इट इज एक्चुअली अ यंग फोल्ड माउंटेन, ठीक है, तो उसमें स्टीप स्लाइड होता है ऐसा, and that is why there is highly likelihood of landslides. The chances of landslides are very high. इसलिए आपने देखा होगा उत्तराखंड हिमाचल में बहुत बार आता है. Similarly, Nepal also becomes a victim of landslides and earthquakes, floods and all. तो अभी recently also we have seen this 170 killed as floods and landslides batter Nepal. तो जैसे ही बारिश ज्यादा होगी, floods आएगा, पानी एक्स्ट्रा होगा, तो फिर जमीन खसकना शुरू होगा, landslides will happen. That is what is being discussed here. ठीक है. Now first पेज पे एक और आर्टिकल था ट्यूसडे को. सुप्रीम कीप गॉड्स अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स से सुप्रीम कोर्ट टू तमिलनाडु गवर्नमेंट, है ना, सॉरी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, एंड टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश मिस्टर चंद्रबाबू नायडू. तो आई होप यू आर अवेयर, हम लोगों ने कई बार डिस्कस किया भी. आंध्र प्रदेश में इन तिरुपति यू विल फाइंड अ टेंपल. लेट मी राइट, तिरुपति टेंपल यू विल फाइंड इन द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, where there has been allegation कि वहां पे जो लड्डू मिल रहा था उसमें जो है एनिमल फैट वगैरह फाइंड किया गया था. देन सुप्रीम कोर्ट सेट अप अ कमेटी, एसआईटी बनाए गए, 5-member एसआईटी which comprises of 2 CBI officers as well. Okay, that is what you should be knowing, है ना. तो यही सब एक्चुअली दिस वाज वेरी मच इन द न्यूज. तो अब जो एसआईटी का जो रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग देखेंगे, लेट्स सी व्हाट विल हैपन. तो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग. फिर मैंने आपको बताया भी था कि तिरुपति टेंपल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड. यू शुड नो दीज थिंग्स, दीज फैक्ट्स, है ना. यहाँ पर एक हिल है, उस हिल का नाम क्या है, मैंने आपको कल ही बताया था सैटरडे क्लास में. व्हाट इज द नेम ऑफ द हिल वेयर तिरुपति टेंपल इज सिचुएटेड? प्लीज टेल मी. नो नॉट महेंद्रगिरी. मैंने कल बताया था, यस्टरडेज क्लास में मैंने बताया था शेषाचलम हिल्स. शेषाचलम हिल्स you will find it in Andhra Pradesh, where you will find Tirupati temple located. Seshadri nahi, Seshachalam. Yes Preetham, you tried to attempt the answer, but the answer is Seshachalam. एक मिनट, शेषा ऐसे लिख देता हूँ क्लियरली, चलाम हेल्स, ये है ना, ठीक है. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन. फर्स्ट पेज में एक और आर्टिकल था, कोर सेक्टर आउटपुट टैंक्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन 42 मंथ्स. टैंक्स मतलब होता है डिक्रीज करना सडनली. जो कोर सेक्टर है इंडस्ट्रीज आर्ट कोर सेक्टर से इंडिया में, उसका जो आउटपुट है वो रिड्यूस होने लगा, ठीक है. सो हाउ मेनी कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज आर देयर? यस 8 है. और देखो इस आर्टिकल में क्या लिखा, 6 out of 8 लिखा ना, 6 out of 8 सेगमेंट्स विटनेस द ईयर ऑन ईयर कॉन्ट्रैक्शन. यानी 8 में से 6 में जो है कॉन्ट्रैक्शन देखा गया, which is of course serious thing, है ना. So यही है ना. While fertilizer and steel output grew to a milder pace.
यानी फर्टिलाइजर और स्टील आउटपुट जो है वो कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम दर से इंक्रीज हुआ. Milder pace means compared to last year the growth was slightly lesser. ठीक है. And बाकी 6 में we have seen contraction. So कौन कौन है 8? ये cement, coal, crude oil, electricity, fertilizer, natural gas, refinery products and steel. So these are the 8 core industries in India. जिसमें से फर्टिलाइजर और स्टील में थोड़ा सा ग्रोथ देखा गया. फर्टिलाइजर और स्टील में. ठीक है. That is what you should be knowing. Now, फिर एक फर्स्ट पेज में आर्टिकल द 85 केस अगेंस्ट कर्नाटक सीएम एंड मूदा केस. सो आई होप यू आर अवेयर. एक्चुअली क्या हुआ था, मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मूदा मींस मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी. So there was some allegation of money laundering against the current chief minister of Karnataka. तो गवर्नर gave the sanction, then he went to the high court और हाई कोर्ट ने भी अप्रूव कर दिया कि हाँ इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए. इन्वेस्टिगेशन has to be conducted, and then ED has filed a case of PMLA, है ना. I hope you are aware, ये आपने नाम सुना होगा, Prevention of Money Laundering Act, PMLA से related. Okay, yes. Supreme Court grants anticipatory bail to actor Siddiq. I hope you are aware. देखो इसमें क्या actually ये वाला हेमा कमेटी रिपोर्ट से related है, ठीक है. I have made a separate video on Hema committee report. Please go and watch it. This is very, very important. This is regarding Malayalam film industry. Malayalam film industry, the violence against women and the female actresses. So that is what you should be knowing it. ये काफी न्यूज में था हेमा कमेटी रिपोर्ट, so you should know, go and watch. Okay. And उसी में जो anticipatory bail का मतलब होता है कि before being arrested, person files a petition so that he should be granted bail even before getting arrested. ठीक है, ताकि फ्यूचर में अरेस्ट होने से पहले ही बेल ले लेना, उसको कहते हैं एंटीसिपेटरी बेल. Now, Dada Saheb Phalke Award this year will be awarded to whom? This is very, very, very important. ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया भी था. This is very, very, very important. Dada Saheb Phalke Award 2024. ये 8 अक्टूबर को, यानी डे आफ्टर टुमारो on 8th October we'll be having this. Yes, very good. Safi Nomani, Preetham, you both are right. Mithun Chakravarti will be getting Dada Saheb Phalke Award. तो बस ये नाम आपको याद होना चाहिए, और बाकी सारी चीज जो है ना मैंने इस क्लास में बताया है डिटेल. 78th नेशनल फिल्म अवार्ड्स, आई हैड मेड द क्लास, गो एंड वॉच इट. इसमें मैंने सारी चीज डिटेल में बताया. आई हैव एक्सप्लेन्ड अबाउट दादा साहब फाल्के अवार्ड. सिर्फ यही बताया था कि अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड फ्यूचर में अनाउंस होगा, और साथ में दिया जाता है 8 अक्टूबर को नेशनल फिल्म अवार्ड्स की जब दिया जाएगा, उसी में साथ में ये दादा साहब फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है. ठीक है, सो प्लीज वॉच दिस, और उसमें सिर्फ ये वाला न्यूज ऐड कर लेना. ओके, so this is very, very important. ये day after tomorrow on 8th October it will be news. Now let's move on. फिर वेंसडे को आर्टिकल था ईरान फायर्स मिसाइल एट इजराइल वार्न्स अगेंस्ट रिटेलिएशन एंड ऑल. तो ये सब काफी न्यूज में था. आई होप यू आर अवेयर. ओके, एंड कि देयर हैज बीन तेहरान had attacked. Tehran means the capital of Iran, है ना. So it fired ballistic missiles and all, and there was the explosions were heard in Jerusalem and Jordan Valley. तो ये जेरूसलम है एंड जॉर्डन वैली, ये मैंने आपको बताया था. देखो ये जो है ना, ये डेड सी है, ये सी ऑफ गैलिली है, इसको कई बार मैंने बताया है. और यहाँ पे जॉर्डन रिवर जाती है, जॉर्डन रिवर विच एक्ट्स एज अ बाउंड्री बिटवीन इजराइल एंड जॉर्डन, या वेस्ट बैंक एंड जॉर्डन. तो ये है, यहाँ पे जॉर्डन कंट्री है और यहाँ पे जॉर्डन रिवर है. तो यहाँ पर भी आवाज सुना गया. दैट इज व्हाट एक्चुअली यू शुड बी नोइंग अबाउट इट. ना फिर वक्फ बिल पर आया था, तो वक्फ बिल में वी हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो, है ना. गो एंड वॉच इट ऑन आवर यूट्यूब चैनल. वक्फ बिल करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस सर्च करोगे, यू विल गेट दिस वीडियो. प्लीज गो एंड वॉच एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? 1st अक्टूबर को बनाएंगे. प्लीज टेल मी. Yes, very good. The right answer is Shigeru Ishiba. Yes, Preetham has answered me correctly. और इनसे पहले कौन थे प्राइम मिनिस्टर? Before him, who was the prime minister? Yes, Safi Nomani, you are also right. Apramya Sharma, you are also right. Before him, the prime minister was Fumio Kishida, है ना? Fumio Kishida was the earlier prime minister. Now is actually Shigeru Ishiba.
हाँ, पहले डिफेंस मिनिस्टर, यस yes, Ansh will be having revision series very soon, maybe next class, next to next class in weeks I will be having revision series. ठीक है? Yes, very good, the right answer. Now the next 56 years after IAF plane crash, body of soldier to be handed over to extended family in Chamoli. Yes, ये काफी ज्यादा न्यूज में था एक्चुअली. देखो ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड में यहाँ पे चमोली डिस्ट्रिक्ट है. ओके, अब देखो तो यह हुआ ये कि 56 इयर्स पहले एक इंसिडेंट हुआ था. उसमें था क्या कि एक एरोप्लेन थी इंडियन एयरफोर्स की AN-12. सो ये जा रही थी रोहतांग पास के आसपास, उसके साथ हादसा हो गया. इट हैड एक्चुअली मेट विद एन एक्सीडेंट. 1968 की बात है, एंड उसमें 102 पैसेंजर्स थे. एंड रिसेंटली क्योंकि होता क्या है कि ये बर्फबारी एरिया होता है ना, बर्फ वाला एरिया होता है, तो जो बॉडी है वो सेव रह जाती है एक तरह से ना बर्फ की वजह से. So they have found recently, they have found 56 years after the death of a body soldier, नारायण सिंह सोल्जर का नाम है, उनकी डेड बॉडी मिल गई और उनको फिर चमोली, जो कि चमोली डिस्ट्रिक्ट में, हाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट में उनको भेजा गया था. बिलोंग करते हैं, द पर्सन बिलोंग टू चमोली डिस्ट्रिक्ट, मतलब ठीक है, द पर्सन बिलोंग टू दिस उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, हुज बॉडी हैज बीन फाउंड. और ये एक्सीडेंट हुआ कहाँ था? हिमाचल प्रदेश, रोहतांग में. तो हिमाचल ये है ना, और रोहतांग मेरे ख्याल से यहाँ पे कहीं पे मिलेगा, जहाँ पर लद्दाख और हिमाचल के पास बीच में. ठीक है, सो रोहतांग समवेयर हियर यू विल फाइंड हियर. तो यहाँ उनकी बॉडी मिली एंड नाउ इट विल बी सेंट टू चमोली डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम वेयर ही बिलोंग टू. तो 56 ईयर्स के बाद उनकी बॉडी मिली है, और उनके कोई रिलेटिव वगैरह तो होंगे ना, तो उनको दे दिया गया टू परफॉर्म द लास्ट राइट्स एंड ऑल. His stepson told that Narayan died a couple of years after his marriage to Basanti Devi and all. So that is what you should be knowing. ये वाला इंपॉर्टेंट है. 2 women navy officers to voyage around the world. इसको कहते हैं सरकम नेविगेशन भी लिखते हैं ना, सरकम नेविगेशन. ओके, सरकम नेविगेशन का मतलब होता है पूरी ग्लोब का, जैसे कि मान लीजिए ग्लोब है, एक ग्लोब का पूरा चक्कर लगा देना. So actually that's called as circumnavigation. Okay, so moving the entire globe, one earth once, that's called as. So 2 women navy officers from India, their name are actually Lieutenant Commander Dilna K and Lieutenant Commander Rupa A. They both are female officers and इसका नाम जो है, मतलब जो this scheme is called as Navika Sagar Parikrama, and this is the second edition. एक पहले भी edition जा चुका था 2017 I think के आसपास. दिस इज द सेकंड एडिशन, जो कि पूरा विद द हेल्प ऑफ दिस INS तारिणी एंड ऑल है ना, दे विल एक्चुअली, दीज 2 फीमेल ऑफिसर्स विल मूव द एंटायर, सर्कमनेविगेट द एंटायर ग्लोब, यानी एक बार पूरा ग्लोब का चक्कर लगा के आ जाएंगे. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. यहां से गोवा से शुरू होगी, लाइक दिस. ओके, फिर फर्स्ट पेज में आर्टिकल था सैटरडे को, है ना. चलिए तो हो गया. एटलीस्ट 28 नक्सलाइट्स के लिए छत्तीसगढ़ ऑपरेशन, दिस वी हैड डिस्कस्ड इट एंड ऑल, है ना, इन द लास्ट क्लास, कि दिस रीजन इज एक्चुअली व्हाट वी कॉल इट एज नक्सलाइट अफेक्टेड रीजन, या जिसको हम लोग लिखते हैं LWE, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड रीजन. सो इसमें जो नीचे साउथ में ये बस्तर रीजन है. ओके, वहीं बस्तर में we have seen actually that 28 Naxalites were killed in the operation and all. तो that is what you should be knowing it. इससे पहले 10th अप्रैल को 2nd अप्रैल को 13 Maoists were killed, then 10th अप्रैल 12 Maoists were killed, 16 अप्रैल 29 Maoists were killed, then 9 Maoists were killed 3rd September, then 4th October 28 Maoists were killed. So these things we have actually seen. You should be knowing about it. तो इसमें जो है, in this operation 1 policeman was also injured in a grenade blast and all. Okay, we had discussed it. Then yes, Mr. S. Jaishankar, the foreign minister of India, would be going to Pakistan for SCO, head of the government meeting. Shanghai Cooperation Organization की head of the government meeting है, इसमें जाएंगे. And he has categorically said that there will not be any bilateral talks. He has said that we are not going to engage India-Pakistan relations. एस जयशंकर साहब ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान रिलेशंस में बात करने के लिए नहीं जाएंगे. बायलैटरल यानी 2 कंट्रीज के बीच कोई टॉक नहीं होगी.
ये SCO की समिट है जिसमें सारे मुल्क आएंगे, ऑल द 10 कंट्रीज वुड कम टुगेदर, सो आई एम गोइंग फॉर दैट पर्पस ओनली, ठीक है, दैट इज व्हाट ही सेड। देन SCO समिट जो मेन समिट हुई थी कजाकिस्तान में, उस पर मैंने पूरा वीडियो बनाया, सो गो एंड वॉच इट, ये यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिएगा SCO समिट 2024 करियर लॉन्चर लॉ एंट्रेंस, यू विल गेट दिस वीडियो, गो एंड वॉच इट, ठीक है। फिर मैंने SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ही बताया था कल सैटरडे को, है ना, बीजिंग में कैपिटल है चाइना में, है ना, और रैट्स जो है इनका रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर इसको कहते हैं, रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? यस, बीजिंग चाइना, यू राइट, यस, अप्रैमिया सैफी, यू बोथ राइट। रैट्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? ताशकेंत, उज्बेकिस्तान, वेरी गुड, सो द हेडक्वार्टर इज इन उज्बेकिस्तान, ताशकेंत, ठीक है। यस, प्रीतम सैफी, यू बोथ राइट। लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन SCO, लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन SCO इज, मैंने आपको बताया कई बार, बेलारूस है 10th, उससे पहले 9th जो था वो ईरान था, है ना, दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग अबाउट, है ना। ये तो मैंने बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने SIT बनाया, नया सेपरेट SIT बनाया, है ना, having 5 police officers, 2 will be from CBI, ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट अबाउट द तिरुपति लड्डू क्लेम एंड ऑल, कि इसमें बहुत सारे एलिगेशंस, काउंटर एलिगेशंस लगे, सो उसको फाइंड आउट करने के लिए, एंड दैट इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड, है ना। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, कीप गॉड आउट ऑफ पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन तिरुपति लड्डू राव एंड ऑल। नाउ मैंने यही पूछा था, ये मैंने कल भी बताया था आपको सैटरडे क्लास में, कि तिरुपति टेम्पल जो है वो कौन से हिल में सिचुएटेड है, एंड द राइट आंसर इज शेषाचलम हिल्स, याद रखिएगा, ये भी न्यूज में है ना। एंड दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड वेंकटेश्वर, ये भी मैंने बताया था, लॉर्ड वेंकटेश्वर हु इज अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, सो प्लीज रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ठीक है, एंड दे आर पार्ट ऑफ शेषाचलम हिल्स रेंज। तो ये आंध्र प्रदेश है, यहाँ आपको तिरुपति मिलेगा, ठीक है। तिरुपति टेम्पल भी कहते हैं या लॉर्ड वेंकटेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, ठीक है ना, या तिरुमाला टेम्पल भी कहते हैं, सो दीज आर द नेम्स। फिर मैंने बताया था केरला अर्जेंटली नीड्स टू आइडेंटिफाई रिस्क जोन, सो दे वर टॉकिंग अबाउट वायनाड लैंडस्लाइड्स रिसेंटली, वायनाड में लैंडस्लाइड्स आया, ओके, यहाँ पे केरला में वायनाड जगह है, एंड दिस इज वेस्टर्न घाट, ठीक है, सो दैट इज व्हाई यू शुड बी नोइंग इट। तो इस पर वो बताइए रहते हैं कि उसमें इको सेंसिटिव जोन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, रिस्क जोन को आइडेंटिफाई करना चाहिए, अनरेगुलेटेड टूरिज्म होना चाहिए, कई बार ओवर टूरिज्म से, ओवर कंस्ट्रक्शन से भी चीजें खराब हो जाती, थिंग्स गोज आउट ऑफ द हैंड, ओके, तो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट। और 2 कमिटी बनाई गई थी पास्ट में वेस्टर्न घाट के प्रोटेक्शन के लिए, एंड व्हाट आर दोज 2 कमिटीज, कोई बता सकता है? हाँ, माधव गैडगिल कमिटी एंड कस्तूरी रंजन कमिटी, yes, Apremya Sharma, you're right, very good. So Gadgil committee was set up, then Kasturi Ranjan committee, these 2 are famous committees. Yes, Preetham, you are also right, very good. Yes, Safi Nomani, you are also right. Caste in jail, इसको भी हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि there we have seen incidents of caste based discrimination even inside the jail. Some people of some caste are treated more better or in a bad fashion as compared to other caste. तो ये सबको पता होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी की बात होती है, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, देन आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, है ना, ये सब पता होना चाहिए। देन आर्टिकल 17 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी और अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी रादर आई वुड से, ठीक है, दिस यू शुड बी नोइंग इट, ठीक है ना। फिर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट, बैटल फॉर सर्वाइवल गाजा एंड ऑल, ठीक है, हियर इज गाजा, मैंने आपको बता ही दिया डिटेल, ओके। सो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, यू शुड नो, दिस इज एक्चुअली एन ऑर्गेनाइजेशन, या मेडिसिन साइंस फ्रंटियर्स भी कहते हैं, इट्स अ चैरिटी humanitarian medical care organization to help people, actually those who are affected in conflict zone, war zone and all, or those who are affected with these diseases, ये सब disease से affected है, that is what you should be knowing about it, है ना।
मेडिसिन साइंस फ्रंटियर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है, फाउंडेड एट पेरिस, है ना. तो ये न्यूज में था बिकॉज दे वेर देयर गोइंग इन गाजा एंड ऑल फॉर हेल्पिंग द ह्यूमैनिटेरियन एड एंड ऑल. सो दिस वाज इन द न्यूज. फिर मॉनसून में मैंने और डिटेल में बताया था, आई डिस्कस्ड इट, कि देयर आर टू फेनोमेनास, एल नीनो एंड ला नीना, दैट हैपेंस वेयर, कहां होता है ये? बोथ हैपेंस इन पैसिफिक ओशन. एल नीनो से साउथ वेस्ट मॉनसून इंडिया का वीक हो जाता है ना, एंड ला नीना से स्ट्रांग हो जाता है साउथ वेस्ट मॉनसून. Yes, the right answer is B. Yes, Aprema Sharma Safi Nomani, you are right. B is the right answer to this question. तो ये है, यहाँ पे होता है एल नीनो, है ना, या ला नीना, और दिस इम्पैक्ट साउथ वेस्ट मॉनसून ऑफ इंडिया. ठीक है, अगर एल नीनो है तो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, साउथ वेस्ट मॉनसून बिकम्स वीक. इफ इट इज ला नीना देन साउथ वेस्ट मॉनसून बिकम्स स्ट्रांग. ठीक है, so these are the things you should be knowing about it. Then PM Modi said that conflict hit regions are important for energy security. Energy security means जैसे oil, natural gas, है ना, and other petrol, diesel, petroleum, natural gas and all. तो conflict hit region कौन सा? जो दो मेन, एक जैसे रशिया है, तो रशिया में, साइबेरिया में natural gas होता है. Then now Iran is also involved in this conflict and all. तो ईरान से भी we buy a lot of oil and natural gas. ठीक है, तो and yes, 85% of India's oil actually we do import. बाहर से इंपोर्ट करते हैं. उसकी रीजन ये है कि अगर वी आर नॉट इंपोर्टिंग, आई मीन वी हैव वेरी लेस डोमेस्टिक ऑयल रिजर्व्स. तो इंडिया में ऑयल रिजर्व बहुत कम होते हैं, इसीलिए. दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग, है ना. दैट इज व्हाट प्राइम मिनिस्टर हैड सेड इन अ मीटिंग एंड ऑल. देन मिस्टर एस जयशंकर हैज गॉन टू श्रीलंका. ये मैंने आपको बताया था, and he has met and he said that we will support for economic recovery, because 1 or 2 years back Sri Lanka's economic crisis was very much in the news कि Sri Lanka में economic crisis है and all. Can you take a session on GI tax? अच्छा, मैं देखता हूँ प्रीतम, I will write in the record and in my notes. अगर if I'll get a chance I will make a class. ठीक है, okay, ठीक है. So that was in the news and all. And who is the new Air Force chief? Please tell me. New Air Force chief. Anyone? Amarpreet Singh. Yes. So his name is Air Marshal Amarpreet Singh is the new Air Force chief now. Anna. Before him, Mr. Vivek Ram Chaudhary was the Air Force chief. Now we are having a new one, Air Marshal Amarpreet Singh. Yes, Apramya Sharma, Preetam, Kushagra, you are right, Anna. You should be knowing it. है ना, नीड टू कैच अप विद टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, है ना. ये सब उन्होंने कहा था. फिर एमपॉक्स से रिलेटेड हमने बताया था कि एमपॉक्स इज अ डेडली डिजीज. नाउ इट इज वेरी मच प्रोमिनेंट इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इन अफ्रीका. इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय WHO. इट इज अ जूनोटिक डिजीज स्प्रेड फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन, है ना. तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए. देन ये सुप्रीम लीडर ऑफ इजराइल, ये मैंने आपको दिखाया था, इजराइल सुप्रीम लीडर, ही टुक गन्स इन हिज हैंड. So his name is Ayatollah Ali Khamenei. अच्छा, एक होमवर्क में दे रहा हूं, प्लीज गो एंड रीड इट बिकॉज आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इरानियन रेवोल्यूशन पढ़िएगा, इरानियन रेवोल्यूशन 1979. इट इज अ होमवर्क एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई वुड सजेस्ट कि देयर इज हाईली लाइक्लीहुड दैट दे विल बी गिविंग क्वेश्चन. क्लैट में आ सकता है. इरानियन रेवोल्यूशन पढ़िएगा, और हु ब्रॉट दिस रेवोल्यूशन, व्हिच लीडर वाज इंस्ट्रूमेंटल इन दैट, पढ़िएगा. ठीक है, बिकॉज ईरान न्यूज में so they can give question from here also. ठीक है, तो ठीक है, तो क्या क्या किस बात पर न्यूज में था? सो ही एक्चुअली गिव अ फ्राइडे सर्मन होता है, उसमें 5 years के बाद उन्होंने फ्राइडे सर्मन दिए, जिसमें हाथ में इज हैविंग AK-47 एंड ही गिव अस पब्लिक मैसेज अगेंस्ट इजराइल एंड ऑल. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू शुड बी नोइंग इट, है ना. और ये नए प्रेसिडेंट बने थे कुछ महीना पहले, दिस वी हैव डिस्कस्ड, बिकॉज द लास्ट प्रेसिडेंट, अर्लियर प्रेसिडेंट, डाइड इन अ हेलीकॉप्टर क्रैश. I hope you are aware. ठीक है, so do you have any question? Please subscribe to our channel, press the like button, share this video, and now I'll be meeting you at 8 PM. 8 PM हमारी क्लास अटेंड कीजिएगा. We are discussing static GK, a lot of important GK, static GK class. I am taking a lot of important questions I am discussing, so do join it. That would be very very beneficial. तो आज 8 बजे शाम में मुलाकात कीजिएगा static GK क्लास से. ठीक है.
So this is all about today's class. Thank you, everyone. Thanks for watching. Have a nice day.